Namaskar. A warm welcome to all of you on our YouTube channel CA Sansaar. Myself CA Vivek Khurana, and today we will discuss on the case studies of NPA. So before going to start, my request to all of you, please subscribe to our YouTube channel CA Sansaar and also press the bell icon so that whenever we upload new video, you will get it notified. So case studies of NPA, non-performing assets case studies. In our previous video, we had discussed about the audit of agriculture advances, NPA of agriculture advances. Then we had discussed about the Kisan credit card restructuring, and also we had discussed earlier IRAC norms. So if you missed that video, please go to the CA Sansaar YouTube channel and also check that video because that's very important. And we will also put the link into iBox, so you can check it from the iBox itself. So before that, one disclaimer is there: all these are my personal views and can't be considered the views of the ICAI, CA Sansaar, or any other person or any other authority. And don't take it like any legal advice, legal opinion, or the professional advice or the professional opinion. Purpose of this video to spread knowledge, information, awareness, and not be treated like solicitation in any manner or for any other purpose whatsoever. Also, please refer the ICI guidance note, RBI Master Circular, RBI Master Direction, RBI Notification Circular, which are applicable, and also bank's policy. So, identification of NPS as per IRAC norms, we had discussed in our अनदर वीडियो. ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई एनपीएस की क्या क्या फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, एंड ड्यू टू इरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, देन फैसिलिटी वाइज उसको कैसे एनपीए करना है टर्म लोन के केसेस में, एंड देन कैश क्रेडिट फैसिलिटी और द ओवरड्राफ्ट लिमिट, उसमें आरबीआई का जो लेटेस्ट clarification on 12th November. This all we have discussed. And then other facility like bill purchase and discounted, liquid facility, cash credit, credit card use, derivative transaction, and then agriculture advances. Agriculture advances पे तो आपको full fledged 2 videos मिल जाएंगे. And then non financial parameters, जो inherent weakness है, non achievement in of DCCO, failure to comply, key restructuring condition, that all we had discussed. Today we will discuss about the NPA case study. तो different examples से we will check how to identify the NPS. So first example, this is from the RBI circular जो पीछे clarification आई थी, उसमें this clarification was there regarding the SMA and the NPA account. So in case if the due date of a loan account is March 31st, कि अगर उसकी due date है March 31st, तो RBI clarified after running the DN process, it will also become the overdue on 31st March itself. आपको ये नहीं कहना overdue 1st अप्रैल को है. 31st March itself जो आपकी ड्यू डेट है, उसी डेट को it will become overdue once the bank run the DN process. Then in this case अगर हमने SMA1 चेक करना है in case of banks को, तो बैंक को SMA 30th अप्रैल रनिंग डे एंड प्रोसेस के बाद जो 30th अप्रैल डेट है, उसी डेट को इट विल बी द SMA1 अकाउंट. एंड देन SMA2 अकाउंट, SMA2 अकाउंट विल बी ऑन 30th May. SMA1 अकाउंट इज अगर आपका कंटिन्यूस ओवरड्यू है 1 to 30 days and SMA2 31 to 60 days. So SMA2 on 30th May upon the running day and process. एंड एनपीए मोर देन 90 डेज वो कब होंगे? 20th जून को अपॉन द रनिंग डे एंड प्रोसेस. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बाय द आरबीआई इन इट्स क्लैरिफिकेशन सर्कुलर. तो इसको यू हैव टू सी, बैंक हैव टू डू द डे रन प्रोसेस ऑन डेली बेसिस. आपको डेली बेसिस पे एसएमए अकाउंट चेक करने हैं, एनपीएस अकाउंट चेक करने हैं ऑन द डेली बेसिस.
एंड एनपीए डेट वुड बी ऑन द कैलेंडर डेट, किसी भी डेट को आपको चेक करना है कि एनपीए है या नहीं है। तो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट केस स्टडीज, a term loan has 4 EMI overdue as on November 21, and subsequently there is a partial recovery in this account. However, two installments have always remained overdue for the rest period of March 2022. So आपकी जिस दिन 4 EMI overdue हो उसी दिन that account become the NPA. तो NPA to performing we had seen earlier, आपकी full recovery होनी चाहिए, but in this case only partial recoveries are there. So नवंबर 21 को ही आपका अकाउंट एनपीए होगा और मार्च को भी एनपीए होगा, मार्च 22 को। आपको मार्च को नहीं एनपीए करना, नवंबर 21 को दैट अकाउंट बिकम एनपीए एंड विल कंटिन्यू टू बी द एनपीए ऑन मार्च 22 itself. And in next case, a term loan account has 4 EMI overdue as on November 21, and subsequently there are entire recovery on 20th June. However, again he didn't pay two EMIs, Feb or March. So November 21 को account becomes, जिस दिन आपका account 4 EMIs overdue है, नवंबर में ही account become NPA. Then entire recovery हो गई, तो 20th Jan itself accounts become performing. उसके बाद 2 EMI नहीं पे करी Feb and March, so no issue, account will remain as the performing account because 3 installment more than 90 days है, तो 2 only pendings are there, तो this account is the performing account. Then in next case, a term loan account, amount of loan is 6 lakh and the EMI is 15,000 per month. EMI due date is 5th of each month. Borrower has paid EMI till November. नवंबर तक उन्होंने EMI पे करी as on filing due date on 5th November. So 5th December, 5th Jan, 5th Feb, 5th March. तो आपकी 4 EMIs overdue है, तो आपको चेक करना है 90 डेज, मोर देन 90 डेज कब हो रहे हैं, तो उस डेट को अकाउंट विल बिकम एनपीए। तो 4th मार्च को आपको कंटिन्यूअस जो रनिंग डे एंड प्रोसेस हो जाएगा 90 डेज, तो अकाउंट विल बिकम एनपीए। And in this case, a term loan account has 4 EMI overdue as on 31st March 2022, and subsequently the entire overdue are recovered on 8th April. मीन्स जिस दिन आप बैलेंस शीट साइन कर रहे हो 31st मार्च को, उसके बाद अमाउंट को रिसीव हो गया, देन वेदर अकाउंट बिकम एनपीए और नॉट, सो दिस अकाउंट इज एनपीए। जो आपको सब्सिक्वेंटली रिकवरी है डजंट मेक एनी डिफरेंस, आपका जो अकाउंट अपग्रेड होगा इट विल बी ऑन 8th अप्रैल, 31st मार्च को आपका अकाउंट विल बी एनपीए। तो सब्सिक्वेंट रिकवरी आफ्टर द बैलेंस शीट डेट डजंट कॉन्स्टिट्यूट द इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, तो आपको सिर्फ दिस अकाउंट विल बी एनपीए। एंड देन date of sanction is 31st in case of term loan, 31st December 19. Amount of loan is 12 lakh and the amount of installment is rupees 10,000, जो principal amount है plus interest non EMI, outstanding as on 31st March 2022 10 lakh 10,000. So in this case, this is very important example, we have to see the reverse calculation. आप किसी भी टर्म लोन को उठा लो, उसकी आउटस्टैंडिंग चेक करिए ऑन 31st मार्च को कितनी आउटस्टैंडिंग है एंड व्हाट वाज द सैंक्शन डेट एंड कितना अमाउंट उसने पे कर दिया एंड व्हाट इज द बैलेंस अमाउंट। आप एक तो उसको एक्सेल में आप सारे जितने भी आपके टर्म लोन अकाउंट्स हैं, आस्क द डिटेल ऑफ दैट, उसको एक्सेल में आप ड्रॉ कर लीजिए एंड आस्क फॉर द सैंक्शन और कितनी ईएमआईज हैं। सो इन दिस केस हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट ही पेड, तो जनवरी 2012 इंस्टॉलमेंट्स आर देयर, this 2020 में 2021 12 installment, 3 installment of Jan Feb March 2022, to total 27 installments was dues, so 2,70,000 and 12 lakh minus 270, it's 9,30,000, but in books outstanding balance was 10,10,000 rupees, so it means 80,000, 8 installment was overdue। तो आपको चेक करना है 8 इंस्टॉलमेंट्स कौन सी ओवरड्यूज हैं एंड 90 मोर देन 90 डेज, तो तभी ही अकाउंट बिकम द एनपीए। तो दिस इज अगेन आई एम सेइंग रिवर्स कैलकुलेशन इन केस ऑफ टर्म लोन, आप उसको एक्सेल में चेक कर लीजिए एंड
कैलकुलेट यूर सेल्फ कि कितना आउटस्टैंडिंग होना चाहिए एंड व्हाट्स द बुक्स. अगर मैच कर रहा है देन इट्स ओके, अदरवाइज check in detail. So in next case, term loan account has 4 EMI overdue as on 31st March and subsequently account is closed on 8th April. जो previous case में हमने देखा full recovery, here we have seen account has closed. So this account is also NPA on 31st March because we are identifying the NPA as on 31st March, not on 8th April. Because अकाउंट अपग्रेड अगर 8 अप्रैल को है या पेमेंट आई है तो डजंट मीन्स इट्स नॉट द इवेंट्स occurring after the balance sheet date. So this account is also NPA on 31st March. So a term loan account in next example case study, a term loan account has 4 EMIs overdue as on 31st December. So 4 EMI, so account become NPA and was accordingly marked as NPA. Subsequently, entire overdue was recovered on 28th Feb. So there are no overdue in this account. Would this account be eligible for NPA? For yes, definitely. अगर आपकी full recovery आ गई है, this another clarification was there this time कि in another facility also कि अगर आपके पास कोई टर्म लोन है, you have to see for the cash credit या फिर कोई और लोन ले रखा है उन्होंने, तो उनके भी ओवरड्यूज अगर फुल रिकवर हो गया देन अकाउंट विल बिकम द परफॉर्मिंग एंड वी डोंट हैव टू वेट. फेब इटसेल्फ आपका अकाउंट परफॉर्मिंग हो जाएगा, फेब से ही आपका अकाउंट विल बिकम परफॉर्मिंग. And then in next case study, in case of term loan account, borrower has prepaid 9 monthly EMIs in the month of July and subsequently has not paid any amount in the credit of term loan. Would the account require to be classified as NPA as on 31st March 2022? So in this case, borrower ने प्रीपेड की आपकी जितनी 9 months की इंस्टॉलमेंट थी एडवांस में पे कर दी. तो इन दिस केस वी हैव टू सी द पॉलिसी ऑफ द बैंक कि बैंक की क्या पॉलिसी है इन केस ऑफ एनी in case of no clear instruction by the borrower कि how the bank will adjust either first from the interest or the principal. But अगर borrower ने clearly instruct किया है कि this is as the EMI means principal plus interest, then this account is no performing as account and no need of NPA. कोई NPA नहीं है. Then in next case, a term loan account has availed a term loan of rupees for the purchase of car or rupees 20 lakh. He has not paid 2 months installment as on 31st March. तो कार परचेज की है 20 लाख रुपीस की, 2 इंस्टॉलमेंट्स और ओवरड्यूज. अगर हम सिंपली चेक करें तो दिस अकाउंट इज नॉट एनपीए. बट नेक्स्ट लाइन, while checking the loan file, letter of controlling authority that it has come to the notice of the branch that his car has been stolen. तो कार ही चोरी हो गई. So in this case, account become loss assets. तो आपको सीधा इसको loss assets में ले जाना है because security become zero. In case of vehicle loan, security आपकी जो primary security is the car itself, vehicle itself, तो अब security नहीं है तो उसकी value zero, तो less than 10% goes to the loss assets. So this account into the loss assets. And then another thing in this case, we have to check the insurance etc जो receive हुआ है, that the separate matter. In case of CC OD facility, आपको CC cash credit या OD facility में an account is operated within the limit, but there are no credit in the said account since 1st Jan. Would such account be required to be classified as NPA even though it's not overdone for a single day? So for NPA, in case of cash credit or the overdraft, we had checked that account should be account to be as a out of order account. तो out of order में आपकी दो conditions थी. First was outstanding amount in excess of sanction limit or the drawing power continues for a period of 90 days. Second case, if it's not excess but no credit continues for 90 days period, or credit is there but not sufficient to adjust the interest debited in that period. So in this case, Jan, Feb, March, 3 months कोई credit नहीं है तो account become the NPA. आपको 90 days के अंदर आपका account will be the NPA. And in another case, Mr. X is having CC limit of 6 crore with a bank and DP limit of 5 crore as on 31st December.
account is overdrawn from position 25th December to 31st March, and then during that period Mr. X deposited a check of rupees 30 lakh to the make the account within the limit as on 15 March, and accordingly account is within 4 crore as on 15 March status of NPA. So in this case account overdue है 25th December to 31st March, तो 90 days है, but 15 March को Mr. X has deposited the check of rupees 30 lakh. So in that period, 90 days में amount is received, and also it's sufficient to cover the interest. We assume that so all condition fulfilled. So in this case, account is performing note NPA. And if another question, इसी में हम ले लेते हैं, if the check is bounced, जो उन्होंने 30 लाख रुपीस का चेक दिया है मिस्टर एक्स ने, it's bounced. So in this case, we have to see that if no check has been deposited, तो कोई भी चेक डिपॉजिट नहीं हुआ, overdue है 90 days से, तो this in second case account will become NPA. तो first case में account is not out of order, so account is not NPA, लिख के NPA, and in second case check bounce, it's the NPA account. And then another case study, in case of CC audit facility, Mr. X is having CC limit of rupees 6 crore with a bank. Last stock statement submitted on 8th October, specifying the detail of stock on 6th October, NPA status of 31st March. So we have seen the NPA identification in IRAC norms, other criteria. वैसे तो बैंक आरबीआई हैड सेड इन केस ऑफ टेम्परेरी डेफिशिएंसी कि अगर स्टॉक स्टेटमेंट नहीं है या इन केस ऑफ टेम्परेरी डेफिशिएंसी ओवरड्यू है, डोंट ट्रीट अकाउंट टू बी एनपीए. बट एक्सेप्शन वाज आल्सो देयर. अगर आपको स्टॉक स्टेटमेंट नहीं रिसीव हो रही या आपको 6 मंथ तक 180 डेज तक आपने रिन्यूअल नहीं करी, तो स्टॉक स्टेटमेंट के केसेस में इफ इट्स मोर देन 3 मंथ्स ओल्ड है, दैट्स आल्सो इन केस ऑफ लार्ज बोरोवर. तो वी अज्यूम फर्स्ट केस इज लार्ज बोरोवर, सेकंड केस इज स्मॉल बोरोवर. तो लार्ज केस में उसने 6 अक्टूबर की जो स्टेटमेंट स्टॉक स्टेटमेंट डिपॉजिट सबमिट करवाई है, इट्स वैलिड फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स, नवंबर 6, दिसंबर 6 and Jan 6 plus 90 days. So in this first case account is not NPA, but in second case it's 6 October plus 90 days. So second case means small borrower, maybe it can be debatable issue. आपका बैंक मैनेजर will say no, in this case also 3 months required, but nowhere RBI had clarified about the large borrower. लार्ज बोरोवर को कहीं डिफाइन नहीं किया उन्होंने. सो इन दिस केस इट्स माय पर्सनल व्यूज, अकाउंट विल बी एनपीए. एंड देन इन केस ऑफ सीसी फैसिलिटी is short review twice for a period of 90 days each, firstly July to September, 3 months तब थी, then October to December. Would the account be classified as NPA, PA, or the NPA as on March 21 if the same is not renewed till time? So short review is not valid. आपका account should be renewed within 180 days from the original date of renewal. So in this case, it's not renewed, so account will be NPA. Next case, CC limit rupees 1 crore and LC 25 lakh. Bank is having the system to recover term loan EMI from the CC account on regular basis. So this is as per bank policy, and on 31st December 2021 CC balance is rupees 80 lakh, and during the period 1st Jan to 31st March balance is within 80 to 85 lakh and interest duly served by the borrower. So condition is fulfilled. LC of 25 lakh devolved on 19 December, and bank kept the same in LC devolved account separately till 31st March 2022. The account is not repaid since status of NPA. So one thing, see the bank policy. Bank has clearly mentioned कि in case of LC devolved, अगर LC devolved होनी है तो you have to debit into the CC account. CC अकाउंट में आपकी जो उसकी ड्यूज थी वो भी वहीं से अकाउंट से लेने हैं आपके टर्म लोन के,
एलसी डिवॉल्ट के केसेस में भी आपको सेपरेट अकाउंट में नहीं लिखना, आपको वहां पे लेना है। तो 19 दिसंबर को अगर इसको डेबिट कर देते हैं आपके सीसी अकाउंट में, देन द ओवर ड्यू वुड बी 105 to 1110. तो दिस अकाउंट विल बिकम एनपीए। तो दिस इज कंटिन्यूअसली 90 days overdue। सो बैंक डिड वेरी क्लेवरली उसको सेपरेट अकाउंट में रख दिए 31 मार्च तक। बट व्हाट बैंक शुड डू, इसको डेबिट करना चाहिए सीसी लिमिट अकाउंट में, देन सी द अमाउंट 25 लाख प्लस 80 to 85 लाख, 105, 1 crore 5 lakh and 1 crore 10 lakh. So this account will be NPA account. And in next case, a borrower had availed overdraft against the property of turnover of rupees 5 crore against the primary security of immovable property of rupees 20 crore. Subsequently, the said property was subject to the valuation and the present value of the said property is 80 crore. Would this account be required to be classified as doubtful even though the outstanding balance is rupees 2 crore? So we have to see the value of the property. जो पीछे हमने डिस्कस किया था नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर में, if erosion value of the security becomes down, so in this case it's down more than 50%, so this case would be directly into the doubtful assets. तो we don't have to see कि कितना आउटस्टैंडिंग है, दिस इज बियॉन्ड 50%, आपकी जो प्राइमरी सिक्योरिटी है उसकी वैल्यू डाउन हो गई है मोर देन 50%, सो डायरेक्टली क्लासिफाइड इनटू द डाउटफुल एसेट्स अकाउंट। Then XYZ Enterprises is a partnership firm with XYZ partner. The term loan of XYZ Enterprises is marked as NPA by the bank, but bank does not mark the housing loan availed by partner X, and the same is regular in term of repayment, and X is not overdue beyond 90 days. Thus, the bank is required to also mark the housing loan account of the partner X is NPA. Will situation change if the property given as a security for housing loan is taken as collateral for loan exactly to partnership firm? So we have checked the NPA to be the borrower wise, not the facility wise. In this case, partnership firm is a different statute. So bank is right, उन्होंने नई अकाउंट किया, it's his right, will not apply your classification individual and the partnership basis. And in case there would be any change in asset class through security both exposes, there would उसमें भी उसमें कहा है कि अगर additional तो no change will be there. And in next case study, a large variance in case of DP of CC account observed in DP calculation as per March stock statement and as per audited financials. What auditor should do in this scenario? मोस्ट ऑफ द केसेस हमें मिलता है कि जो स्टॉक स्टेटमेंट स्टार्टिंग में सबमिट करवाई या स्टॉक एज पर द बैलेंस शीट फाइनेंशियल जो ऑडिटेड फाइनेंशियल है, ह्यूज डिफरेंसेस आर देयर. First you have to see the variation. What's the percentage? 5-10% is okay, but if it's more than that, then you have to check the reverse calculation. You have to check the DP as per your own calculation and then can mark the account as the NPA. So auditor need to seek the clarification regarding large variance, and based on clarification received and overall conduct of account should take a call as the regards the classification CGA account. तो first आपको you have to ask from the management, जो भी branch manager है उससे पूछना है कि why these variance are there. If some satisfactory evidence are there, then it's okay. Otherwise you can take your call, उसको आप account को NPA कर सकते हैं. In case of CC account, sanction limit is rupees 1 crore and the DP limit assessed by the bank is rupees 1 crore. In audit, it is observed that bank had not taken in consideration for debtor cover period and the debtor margin. So as for revised detail of the basis of sanction letter, DP limit assessed would be 55 lakh only. As on 31st March, outstanding balance is 90 lakh and the balance is above 75 lakh throughout the year. So definitely this account will be the NPA. So first you have to check, even DP calculation में you have to take the debtors stock plus debtors जो आपके एजिंग एज पर बैंक पॉलिसी है, whether बैंक रिक्वायर्ड फॉर 90 days or the 180 days, वो आपको चेक करना है, लेस द क्रेडिटर अनपेड स्टॉक.
and also reduce the margin. That's the correct formula for the DP calculation. So you have to check your own. आप अपने आप से उसको check करिए what's the DP limit are there. Then check if it's outstanding. Then account can be NPA. So it's in this case account is NPA, more than 90 days outstanding is there. And then CC limit 60 lakh, term loan 160 lakh, 1 crore 60 lakh, and the EMI of term loan 2,50,000 rupees. Bank is having system to recover term loan EMI from the CC account on regular basis. On 31st December 2021, CC limit is 60 lakh rupees, and November and December EMI not recovered because account is fully utilized. So in this case, bank debited the EMI in CC account as on 25th March, even though CC is overdrawn position. So what would be the NP status? So in this case, bank did very cleverly. 25th मार्च को उन्होंने जो टर्म लोन की आपकी जो ईएमआई थी नवंबर एंड दिसंबर उसको डेबिट कर दिया. तो दिस वाज वेरी स्मार्ट अरेंजमेंट बाय द बैंक, because in this case bank did both the accounts are performing account, but the fundamental rule is if the account is overdrawn, because 60 लाख से ऊपर अगर ओवरड्राउन करते हैं अगर है अगर उसकी लिमिट्स है तो ईएमआई शुड नॉट बी डेबिटेड. So because interest also there, so in this case we have to see like no EMI is received and both accounts are NPA. उस केस में भी more than 90 days and CC में भी ओवरड्रान है, तो in this case both accounts are NPA. So consortium finance में क्या होता है, one lead banks are there and some other bank are there. So in this case A are the lead bank, B are our bank which we are auditing, and another banks are also there. So borrower not paying EMIs on the timely basis. वो पे नहीं कर रहा, कभी किसको पे कर रहा है, किस बैंक को, कभी किसी बैंक को पे कर रहा है. So as on 31st December जो लीड बैंक ने account declared as NPA, but our bank is receiving the amount on continuous basis and amount is fully recovered. So B bank has not declared this account as NPA. So whether it's correct or not. So in case of consortium finance, we have to see on the basis of individual bank. हमें ये नहीं देखना कि उस बैंक को रिसीव हुआ है या हमें नहीं रिसीव हुआ है. We have to see our own. हमें अमाउंट भी मिल रहा है, हमें मीन्स our own बैंक जो बी बैंक है, बी बैंक is receiving full amount, so it's not NPA. And consortium finance, another case, A lead bank, B our bank in audit, and also another banks are there. So lead bank जो A है is recovering the amount, and sometime he gave some portion to other banks, sometime वो पे नहीं करता. So borrower ने सारा amount पे कर दिया जो भी as per recovery, but our bank has not received any amount. So in this case B bank will declare as the NPA. बी को अपनी बुक्स में क्योंकि अमाउंट नहीं रिसीव हुआ 90 डेज से ज्यादा, तो उसको एनपी रिकवर कर देगा. बाकी बैंक हैव रिसीव तो वो अपनी बुक्स में देखेंगे. तो इन कंसोर्टियम फाइनेंस वी हैव टू सी इंडिविजुअल बैंक वाइज रिकवरीज जो भी है इंडिविजुअल बैंक वाइज. देन अनदर केस इज देयर XYZ लिमिटेड, सीसी लिमिट इज 10 लाख रुपीस, नो ऑपरेशन इन अकाउंट रूटीनली, only interest paid in full at the end of the quarter. As on 31st March, outstanding balance rupees 10 lakh and no were due. So in this case only interest is payment. So we should ask clarification for the bank manager. Bank manager say we have to ask if account with solitary or few credit at the year quarter end, or few credit in the accounts and only to save the account as performing, this is like the inherent weakness in the account and can be classified as the NP. So first we should ask this from the bank manager कि what's the reason, क्यों only interest pay कर रहे हैं, why no other debit or credit amount is there, why it's not rated through the turnover because it's the CC limit. This is full-fledged inherent weakness of the account, so it can be classified as NPA. And XYZ limit
XYZ Limited CC limit is 2 crore rupees, and as on 31st December, outstanding balance 2.2 crore, balance also on 29th March 2.8 crore, and all overdue clear on 29th March from director accounts. In audit, it observed that director accounts are given personal loan by the same bank to clear overdue of the company's account. So this is also the case of NPA to save one account as the NPA account. तो इन दिस केस आल्सो जो आपकी गाइडलाइंस है, आपको जो in case of amount received should be from the genuine this one sources, but it's this case this is from the director's personal account, और वो लोन भी बैंक ने itself provide किया, किसी और ने provide किया, then we have to see, but same bank is providing only to save the NPA on this one account, so this will be NPA account. So this one another agriculture advances के cases में this I have taken from the ICAI गाइडेंस नोट. तो एग्रीकल्चर के ऊपर हमने फुल फ्लेज वीडियो बनाया है, आप उसको चेक कर सकते हो सीए संसार यूट्यूब चैनल के ऊपर. टू वीडियोज आर देयर, वन इज फॉर द पार्ट 1, अनदर वन पार्ट 2. तो उसमें शॉर्ट टर्म क्रॉप के केसेस में कैसे एनपी आइडेंटिफाई करना है, लॉन्ग टर्म क्रॉप के केसेस में कैसे एनपी आइडेंटिफाई करना है, एंड वी हैव टू सी द क्रॉपिंग पैटर्न whether it's a single or the multiple, कि only one crop are there या multiple crops are there. जो first crop है, first crop is basically for the single or the monocrop. तो two types of crops are there, खरीफ एंड रबी. इसके ऊपर पूरा डिटेल हमने डिस्कशन किया है एग्रीकल्चर एडवांसेस के ऊपर. सो इन फर्स्ट केस जो आपके खरीफ है इस बेसिकली अप्रैल टू सितंबर, रबी अक्टूबर टू मार्च, एंड देन लॉन्ग टर्म शुगर केन एंड बनाना. तो इसमें खरीफ में आपका हार्वेस्टिंग टाइम कब होगा, सितंबर. रीपेमेंट ड्यू डेट सितंबर 20, डेट ऑफ रिक्वेलिटी सेम 31 दिसंबर 20, एंड फर्स्ट क्रॉप सीजन जो एंड होगा आपका एज पर आईसीआई गाइडेंस नोट 31 दिसंबर 2021. सेकंड क्रॉप सीजन एंड होगा आपका 31 दिसंबर 2022. सो डेट ऑफ एनपीए वुड बी 31 दिसंबर 22 इटसेल्फ. एंड इन केस ऑफ रबी सीजन जो आपका सैंक्शन टाइम है या डिसबर्समेंट है आपकी अक्टूबर 20 टू मार्च 21, हार्वेस्टिंग टाइम आपका मार्च 21 है, एंड रीपेमेंट डेट 30 जून को, बिकॉज इन हार्वेस्टिंग इट आल्सो इंक्लूड्स आपका जो मार्केटिंग एंड द सेल्स टाइम है वो भी कवर होगा. तो इन फर्स्ट के 30 जून है, डेट ऑफ इट रेगुलरिटी सेम 30 जून, एंड फर्स्ट क्रॉप जो आपका सीजन एंड होगा वो 30 जून 22 को, एंड सेकंड सीजन आपका 30 जून 23 को, और एनपी डेट इज आल्सो 30 जून 2023. एंड शुगर केन में बेसिकली यहाँ पे 21 मंथ्स आते हैं, यहाँ पे इस केस में एज पर आईसीआई गाइडेंस नोट इट्स 24 मंथ्स, और हेयर इट्स आल्सो 24 मंथ्स इन शुगर केन आर द बनाना शुगर केन केसेस में, लॉन्ग टर्म क्रॉप के केसेस में. सैंक्शन डेट 1 अक्टूबर, हार्वेस्टिंग टाइम दिसंबर 2022, रीपेमेंट ड्यू डेट 31 मार्च, date of irregularity 31st March 2021, first crop 31st because it's more than 1 year, so 31st March 23 to 31st March 23 को लेगा. This is the case of single monocropping pattern, and this is the multiple cropping pattern. मल्टीपल क्रॉपिंग में क्या है, खरीफ एंड रबी एंड देन खरीफ. तो इस केस में जो आपकी सैंक्शन डिस्बर्समेंट है अप्रैल टू सितंबर, आपका हार्वेस्टिंग टाइम है सितंबर 20, एंड देन रीपेमेंट डेट बिकॉज आल्सो नीड एडिशनल टाइम फॉर मार्केटिंग एंड सेल्स 31 दिसंबर. तो डेट ऑफ इट रेगुलरिटी 31 दिसंबर इटसेल्फ. देन फर्स्ट क्रॉप जो होगी वो रबी की होगी, देयर टाइम इज 30 जून 21, एंड सेकंड क्रॉप जो खरीफ की होगी 31 दिसंबर, डेट ऑफ एनपीए 31 दिसंबर इटसेल्फ. And same in case of Rabi itself. This is for the multiple and the double cropping. But as per my observation, might be I am wrong. In that video, I have also said might be I am wrong, because as per RBI circular, they said if the overdue for more than 2 crop session in case of short-term loan and 1 crop session, 1 crop season they have said, 2 crop season or the 1 crop season, they have not said the time period also. टाइम जो मिलेगा आपको फर्स्ट केस में ही मिलेगा. लाइक फॉर एग्जांपल आपने लोन दिया टू द फार्मर्स, तो फार्मर्स को आप लोन प्रोवाइड कर रहे हो, दिस इज आइदर फॉर द खरीफ और द रबी और द खरीफ. तो आप फर्स्ट सीजन के लिए टाइम दोगे ना कि आपने खरीफ के लिए लोन दिया, तो यू कैन से ओनली कि आपका पीरियड हार्वेस्टिंग पीरियड कब है,
फॉर एग्जांपल आपने खरीफ के लिए 1 जून को लोन दिया, तो सीजन स्टार्ट जून, हार्वेस्टिंग टाइम अक्टूबर टू नवंबर, तो आप दिसंबर जन फेब दे रहे हो उसको टू सेल मार्केटिंग के लिए, तो 31 मार्च आपको रीपेमेंट डेट है। तो दिस यू हैव टू सी ओनली फर्स्ट टाइम, नॉट इन द सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम तो ओनली आपको चेक करना है आपका क्रॉप सीजन कब ओवर हो रहा है, उसकी हार्वेस्टिंग कब हो रही है। तो इन दिस केस अक्टूबर 19, और सेकेंड केस में अक्टूबर 1922। तो खरीफ के केस में 21 मंथ्स जो एनपी है, एज पर माई ऑब्जर्वेशन, माइट बी आई एम रॉन्ग, अगेन आई एम सेइंग आईसीआई सेड इट्स 24 केस, बी दे आर डूइंग, बट मेरी ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। रबी के केस में सेम, दिस इज फॉर सिंगल आर द मोनोक्रॉप। और इन केस ऑफ मल्टीपल, इसमें मैंने डिफरेंट डेट्स भी दिए, आप उसको पूरा डिटेल अलग वीडियो में चेक कर सकते हो। देन मल्टीपल के केसेस में, मल्टीपल के केसेस में अगर खरीफ में आपका रीपेमेंट डेट 31 मार्च है एंड सीजन स्टार्ट अक्टूबर 20, जो आपका खरीफ के बाद आपका फर्स्ट रबी का आएगा, अप्रैल मई में आ जाएगा, देन अगेन खरीफ का, तो अक्टूबर नवंबर हार्वेस्टिंग टाइम, तो 31 दिसंबर वुड बी द एनपीए डेट। एंड रिमेंबर दिस थिंग, इन ऑल दिस केस एग्रीकल्चर लोन में आपको चेक करना है बैंक ने आपको रीपेमेंट टाइम कौन सा दिया है। आइदर इट कैन बी, खरीफ के केस में 31 मार्च भी हो सकता है, या अप्रैल भी हो सकता है, या मई भी हो सकता है। इट्स एज पर जब आप लोन ले रहे हो या बैंक की पॉलिसी हो, एंड ऑल्सो एज पर डिफरेंट स्टेट। हो सकता है एक स्टेट में सोइंग टाइम डिफरेंट, हार्वेस्टिंग टाइम डिफरेंट, बिकॉज खरीफ इज ऑन द बेसिस ऑफ मानसून। हो सकता है महाराष्ट्र में या फिर उड़ीसा में मानसून जल्दी आ गई हो, तो वहां पे सोइंग एंड हार्वेस्टिंग इज अर्लियर, एंड इन दिस यूपी, महाराष्ट्र, यूपी, पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ साइड में मानसून लेट आई है, तो वहां पे लेट टाइम पे सोइंग एंड द हार्वेस्टिंग है। सो दिस ऑल कैन बी चेंज, दिस इज ओनली द एग्जाम्पल। डोंट टेक, आप उसको कभी भी मत लीजिए कि 24 मंथ्स है या 24 मंथ्स है। यू हैव टू सी ओनली रीपेमेंट डेट and 2 crop session in case of short term crop loan, and 1 session in case of long term loan. So this also we had discussed कि अगर आपका टर्म लोन प्लस क्रॉप लोन है, आपके जो क्रॉप लोन प्लस टर्म लोन है, उस केस में कब एनपीए है, ये पूरा हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सो this all are regarding the NPA case studies. I have tried my level best. So in case you have any query, any doubt, or any feedback, then you can message me or you can mail me. These are my details. And even if you want, we should also record some more videos on some different topic, because I have also received some messages or even the comment box. Somebody said about the CBS norms, so we'll try to bring videos on the CBS norm, different commands in the Finacle and the TCS banks. We'll try on the FlexCube also. And somebody have also requested for the MOCs कि कैसे हमने MOC generate करनी है, and also one more request was there कि LAFAR, रिवाइज लफार में। तो विल ट्राई इन नेक्स्ट वीडियो जो एडवांस पोर्शन है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू गिव द ऑडिटर्स कमेंट इनटू द रिवाइज लफार। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, एंड आल्सो like the video itself. Thank you very much.